स्टूडेंट्स आज हम आउ गोटे टॉपिक स्टार्ट करबा सेटा हला माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 प्रीवियसली हमर विंडोज 7 नो वीडियो ऑलरेडी हे छि तो बर्तमान जोडा नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करछे सेटा विंडोज 10 जदि के देखिना विंडोज 7 नो वीडियो देन देखो हमर अछि कंप्यूटर अछि बा तमर जीबी लैब स्टूडेंट अछि बा जीबी टीचर साथी को से विंडोज 7 वीडियो देखे परिबे तो आज मैं गोटे नुआ ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करबा नुआ तो नुहे गोटे अपग्रेड ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 अपग्रेड दैट इज विंडोज 10 तो फर्स्ट एनिमा व्हाट इज विंडोज 10 now windows 10 is the most recent version of microsoft windows operating system microsoft windows operating system ro jodi sabuto recent version koda se ala windows 10 there have been many different versions of windows over the years including windows 8 जोटा कि रिलीज हेतरा 2012 रे विंडोज 7 जोटा कि रिलीज हेतरा 2009 रे विंडोज विस्ता जोटा कि रिलीज हेतरा 2006 रे एंड विंडोज एक्सपी जोटा कि रिलीज हेतरा 2001 या बाद में और बहुत बड़े वर्जन अछि जोटा कि मझे मझे रिलीज हेतला तो एगुडा पॉपुलर वर्जन थिला जोटा कि बहुत भलो काम करथिला while older versions of windows mainly run on desktop and laptop computers windows 10 is also designed to run equally well on tablets also. Windows 8.1 हो बा Windows 10 हो एगुडा का हमरा टैबलेट रे हमरा यूज होछि लैपटॉप रे यूज होछि डेस्कटॉप यूज होछि ता सहित टैबलेट रे भी यूज होछि एटी गोटे क्वेश्चन आछि जे ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली करे कोन Now operating system manages all of the hardwares and softwares on a computer. Without it, the computer would be useless. It does nothing without operating system. मोटी केवल Windows 10 बा Windows 7 बस कोनी जे कोनी से ऑपरेटिंग सिस्टम जदि गोटे कंप्यूटर रे ऑपरेटिंग सिस्टम नाही that computer is useless. से करे कोन ना it manages all the hardwares and softwares on a computer. Okay, so next question is what is an operating system? Now an operating system is the most important software that run on a computer. Computer रे जते भी software तुम run करछो ता भीतर जदी सबुठार important software कोटा then that is operating system. काहे कि ना जदी operating system तमर लोड हेनी अलगा कोनसी सॉफ्टवेयर विषय तुम चिंता नहीं करबे से लोड ही हेबे it manages the computer's memory and processes as well as all of its softwares and hardwares. ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम ये करे कौन ना कंप्यूटर जो मेमोरी अच्छी ताकू ये मैनेज करे प्रोसेस करे एवं जहां भी सॉफ्टवेयर अच्छी हार्डवेयर अच्छी ताकू भी मैनेज करे. It also allows you to communicate with the computer without knowing how to speak the computer language. किछि जरूर नै जेंते हम फर्स्ट जनरेशन पढिथिले कंप्यूटर को जहां भी इंस्ट्रक्शन दिया होतला से जहां भी आउटपुट दोथला सब मशीन लैंग्वेज रे दोथला जे मशीन लैंग्वेज जानिनी से काम करि परनथला किंतु तो ऑपरेटिंग सिस्टम आसी गला ओटे यूजर जानिया दरकार नै जे कंप्यूटर को भाषा बुझछि से तारी भाषा रे इंस्ट्रक्शन दला कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम तक कन्वर्ट कर देला ता माने कंप्यूटर भाषा रे से कंप्यूटर दे देला कंप्यूटर देला आउटपुट देला ताकू पुनी कन्वर्ट कला ह्यूमन लैंग्वेज रे हमको दे देला तो हमको से सब टेंशन किछि न पड़ला नै से सब टेंशन केनेगा ऑपरेटिंग सिस्टम सो जदि हम सेमति कहबा विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम ए कंप्यूटर इज नथिंग ए कंप्यूटर इज यूजलेस next we are what are the jobs of the operating system. Now your computer's operating system और जोटा का शॉर्टकट रखो जे OS जदि के कहबा OS बोल बुझिबा सेडाला operating system manages all of the softwares and hardwares on the computer. एडाला फर्स्ट काम ये जते भी हार्डवेयर अछि जते भी सॉफ्टवेयर अछि सबुडा गुया मैनेज करे. Most of the time there are several different computer programs running at the same time. बहुत देखा मिलछि गोटे समय रे गुडे प्रोग्राम रन होछि बहुत गुडे प्रोग्राम and they all need to access the computer's central processing unit that is CPU memory and storage
गुड़ाए प्रोग्राम यूज होची और समस्त प्रोसेसर प्रोसेसिंग दरकार समस्त मेमोरी स्टोर होगा दरकार एवं सेकेंडरी मेमोरी भी स्टोर होगा दरकार तो जैसे एट ए टाइम एते गुडे प्रोग्राम रन होची समस्त ए सब जिंस दरकार तले कहा पर गुडे कहा मिलबो से के डिसाइड करिवो now that should be decided by the operating system so the operating system coordinates all of this to make sure each program gets what it needed ये समस्त की कोऑर्डिनेट करेबो और कहा को पूरा दरकार से हिसाब रे जहां को पूरा दरकार तक से सिस्टम प्रोवाइड करेबो that's why we are saying that without operating system a computer is useless it can do nothing okay next is about types of operating system also types of operating system now operating system usually come preloaded on any computer जितने जब कंप्यूटर आने प्रायतः लोड है कि ही पड़े आस्था है जो भी तब के लिए से तर लोड करके दे देता है most people use the operating system that comes with their computer मैक्सिमम लोग जोटा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम आस्था है सेटा ही यूज करती but it is possible to upgrade or even change operating system तुम चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड कर पारो बा चेंज भी कर पारो the three most common operating systems for personal computers are अजरा डेट रे मार्केट रे जो मेनली तीनटा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होची they are first Microsoft Windows second Mac OS X and third Linux ए तीनटा ऑपरेटिंग सिस्टम जोड़ा कि मार्केट रे सबुठ बेस चलची Windows Mac OS X and Linux I'm going to देखिबा so modern operating systems use a graphical user interface बा जाको शॉर्ट रे को जाए GUI जोड़ा तुम प्रोनाउंस GUI बोल भी कर पाओ so modern operating systems use a graphical user interface or GUI or GUI a GUI let's use your mouse to click icons buttons and menus and everything is clearly displayed on the screen using a combination of graphics and text जैसे कि जब तुम पचारे GUI रे काम केमती हुए ना a GUI lets you use your mouse to click icons buttons and menus and everything is clearly displayed on the screen तुमको सेट पे किसी टेंशन ना नहीं सब तुम स्क्रीन में देखा जाउथबो सेठी जोटा को खोलिया रहछ ताको डबल क्लिक करो सिंगल क्लिक करो सिलेक्ट करिया को जा भी करो माउस यूज करी करो तो माउस द्वारा तुम आइकन को क्लिक करछो बटन को क्लिक करछो मेनू को क्लिक करछो एवं सब जिंस तुमको ग्राफिक्स और टेक्स्ट देखाउची से भले इंटरफेस को कहती GUI और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तो ये वाला GUI रो स्क्रीन एटा तो विंडोज 10 है स्क्रीन जो देखो ये सब डिफरेंट आइकन अछि विंडोज रे सब डिफरेंट विंडोज रे सबला देखौ छी तो तुमको इजी है जीवा कोनोसी भी जिंस को जानिया पे जे हां एटा कोन की सेटा कोन ठीक अछि नेक्स्ट जीवा में अब की अछि each operating system's GUI has a different look and feel अब जो एठी मतलब तीनटा ऑपरेटिंग सिस्टम कहले जेंति Mac OS X Linux और Microsoft Windows समस्त अंकर जोरा इंटरफेस बा GUI सेम न था समस्त अंकर इंटरफेस बा समस्त अंकर लुक टिके डिफरेंट था समस्त अंकर काम करिवार तरीका भी टिके डिफरेंट था so if you switch to a different operating system मतलब तुम गोटा ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करछ आ गोटा ऑपरेटिंग सिस्टम के जीवा इट मे सीम अनफैमिलियर एट फर्स्ट इनिशियलिटी का अनफैमिलियर लागिवो जे नाने मुदे एटा एठी करथलु एटा एठी नाही तो टिके अनफैमिलियर लागिवो हाउएवर मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर डिजाइन्ड टू बी इजी टू यूज किस दिन यूज कला परे तुम फैमिलियर हे समझ किछि बेसी डिफरेंट नाही काइला लॉजिक सब थरे सेम खाली टिके लुक डिफरेंट आछी टिके करिवार वे डिफरेंट आछी अदरवाइज लॉजिक समस्त अंदर गोटे जे एया ही हबो बस एया तो तमे लॉजिक क्लियर अछ टिके अनफैमिलियर लागो एट द फर्स्ट बट किस दिन परे तुम फैमिलियर हो सो एंड मोस्ट ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल आर द सेम ऑपरेटिंग सिस्टम ना बेसिक प्रिंसिपल सब सेम ओके नेक्स्ट हम जीवा अब जो तीनटा ऑपरेटिंग सिस्टम कहले माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लिनक्स एंड मैक ओएस एक्स टिके खाली जानि जीवा जे विंडोज रे कोन अछि मैक ओएस रे कोन अछि लिनक्स रे कोन अछि कोटा बेसी यूज होची सो फर्स्ट में हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को
Microsoft created the Windows operating system in the mid 1980s. 1980 दशकरे से स्टार्ट कला Windows operating system. Over these years, there have been many different versions of Windows. 1980 राज्य में बहुत बड़े वर्जन बाहर but the most recent ones are जिनके Windows 10 जो कि रिलीज है 2015 में, Windows 8 जो रिलीज है 2012 में, Windows 7 2009 और Windows Vista 2006 और 7 मजरे यूज 7 मॉडल. So Windows comes preloaded on most new PCs. आज डेट रे जहां भी पीसी आसी प्राय सबुथिरा Windows preload हे पळे आसी, which helps to make the most popular operating system in the world. जेहेतु ये preload हे पळे आसी, that's why Windows is the most popular operating system in the world. 80% operating system जोडे वर्ल्ड यूज होची, that is Microsoft Windows. ठीक है जी. नेक्स्ट टाइम जीवा ये हला अपन Windows रो स्क्रीन जो जे हम काम करछे एटा को डेस्कटॉप व्हाटएवर हम आपको विषय कंप्लीटली डिस्कस करिबा. नेक्स्ट जीवा Mac OS X. Mac OS is a line of operating system created by Apple. Windows was created by Microsoft and Mac OS X created by Apple. Apple would company JK Mac OS X operating system create करछि. It comes preloaded on all new Macintosh computers. जते भी Macintosh computer रहछि सबुतरे Mac OS X preload हे करछि. All of the recent versions are known as OS X. बात को जहां जोड़ा काजे OS 10. जहां भी Mac OS रा वर्जन अछि सब काजे OS 10. जेंति आपको काजे Windows Microsoft रा एक काजे OS 10. And the specific versions include जेंति कि recently आछि EI Capital जोड़ा रिलीज हेछि 2015 रे. तापर वर्चला SOMite जोड़ा 2014 और 2014 ने. Then Mavericks 2013, Mountain Lion 2012 and तापर वर्चला Lion जोड़ा 2011 ने. According to StatCounter Global Stats, Mac OS X users account for less than 10% of global operating system. मतलब जितने भी operating system यूज होची तारा मात्र 10% हेले Mac OS X user. Much lower than the percentage of the Windows user, that is more than 80%. Windows user is more than 80%, whereas Mac OS X is less than 10%. So one reason for this is that Apple computers tend to be more expensive. जब हम कंपेयर करिबा Microsoft जहां भी कंप्यूटर यूज ता हिसाब रे Apple कंप्यूटर के बहुत एक्सपेंसिव, ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव. However, many people do prefer the look and feel of Mac OS X. Still, expensive हेले भी तार look बहुत बड़ा लोक भल लागे, सेति में तार 10% पर हम यूजर अछंदी. ठीक अछि. नेक्स्ट में ये हला Mac OS रा स्क्रीन या तार जेमति आमे देखिथिले Windows रा डेस्कटॉप टा ये हला तार सिमति ता मेन स्क्रीन बा डेस्कटॉप जोला हम कोचे बा GUI कोचे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सेते एथरे ही तार काम होई. ठीक है जी. नेक्स्ट भाव है Linux बा Linux. Linux is a family of open source operating system. देखो एठी टिके जानो जे ए ओपन सोर्स कोन आ गोटे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आ गोटे अछि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर. एदिटा कोन ना ओपन सोर्स मींस ताकू जे चाहे बस मॉडिफाई कर परिबो. से ऑपरेटिंग सिस्टम को एनीबॉडी कैन मॉडिफाई इट, कैन डिस्ट्रीब्यूट इट, ताकू जे चाहे जान सम दे परिबो. बट जदे हम प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कथा कहबा ताकू केवल मॉडिफाई करबो जो कंपनी ताकू बनेछि, ताकू डिस्ट्रीब्यूट पे से कंपनी ही करिवो, ताकू जे मन से कर परिबो तार कॉपीराइट्स लॉ रहउछि. सेति दैट इज प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर एंड देयर इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. सो Linux is a family of open source software system or open source operating system, which means they can be modified and distributed by anyone around the world. While कहीं भी तक मॉडिफाई कर परिबो, कहीं भी तक डिस्ट्रीब्यूट कर परिबो. This is different from proprietary softwares like Windows, which can be modified by the company that owns it. तो जो कंपनी तक बने से ही तक मॉडिफाई कर परिबो कोडा ना प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर. किंतु Linux जेत गोटे ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम ताको कहीं भी मॉडिफाई कर परिबे और कहीं भी ताको डिस्ट्रीब्यूट कर परिबे. The advantages of Linux are that it is free.
ताको किनिया पई कोनोसी पैसा लागे नाही and there are many different distributions of or versions बहुत जेहेतु ओपन सोर्स बहुत लोग ताको मॉडिफाई करछन्ती बहुत लोग ताको डिस्ट्रीब्यूट करछन्ती आ तम ताको आनी यूज कर परबो कंप्लीटली फ्री ता पे तुमको कोनोसी पैसा का भी देबार नाही so according to start count of global stars Linux user account is less than 2% of global operating system यार वैसे यूज नहीं however most servers run Linux because it's relatively easy to customize एको कस्टमाइज करिया सहज सेते बहुत बड़े सर्वर लिनक्स ही यूज करते किंतु खास करी सर्वर यूज करते लोग बहुत कम यूज करते बट स्टिल इट्स फ्री सेते बहुत 2% भी अछि तो 2% इज नॉट ए लेस अमाउंट तो ताको भी यूज करते 2% लोग किंतु मैक्सिमम सर्वर लिनक्स यूज करते एई पय काहे ना ये कस्टमाइज करबा सहज ठीक है नेक्स्ट ये है लिनक्स रा स्क्रीन जोथरे कि या लिनक्स रा जीयूआई एची तम काम करछ देखा हमें जितने भी देख ले मैक ओएस देख ले कि विंडोज देख ले बा लिनक्स देख ले ये समस्त का स्क्रीन नियर अबाउट सेम टिके टिके डिफरेंट आछि अदरवाइज लुकिंग सेम और वर्किंग भी सेम रहबो खाली वर्किंग रा प्रोसीजर टिके डिफरेंट आसबो अदरवाइज प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर सेम इन ऑल द ऑपरेटिंग सिस्टम्स okay so next we have operating system for mobile devices the operating systems we have been talking about so far were designed to run on desktop and laptop computers जहां पे हम बताने कहले Mac OS X Windows Linux ऐसा mainly for desktop और laptop computer यूज but mobile devices such as phones tablet computers MP3 players are different from desktop and laptop computers see same नहीं So they run operating systems that are designed specifically for mobile devices. तो सेतरे सही से ऑपरेटिंग सिस्टम रोडे करिवो जोडा कि मोबाइल डिवाइस पे ही डिजाइन हेज एग्जांपल्स ऑफ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंक्लूड जंति एप्पल आईओएस को अछि गूगल एंड्रॉइड अछि सो तम गोटे तले देखो स्क्रीन देखो जंतरे कि आईपैड रे एप्पल आईओएस लोड हेछि ये हला एप्पल आईओएस रा ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी जीयूआई graphical user interface एथरे काम तो ये हला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम then operating system for mobile devices generally are not as fully featured as those of desktop or laptop रे जब fully featured हेतिबो गुडा एप्लीकेशन तम लोड करबो गुडा फीचर्स सेतरे थिबो से बड़ी मोबाइल एते बड़ी फीचर नता however you can still do a lot of things with them बहुत बड़े काम करियो जंती कि you can watch movies browse the web manage your calendar play games एंड बहुत बड़े काम तमे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम रे भी करि परिबो और मोबाइल से करि परिबो नेक्स्ट हम जीवा हाउ इज विंडोज 10 डिफरेंट फ्रॉम अदर वर्जन्स जतबे हमर विंडोज 7 परे विंडोज 8 असला बा 8.1 असला many users complained that Windows 8 the previous version of Windows was confusing and difficult to use. ये बहुत confusing होती है और very difficult to use. As a result, Windows 10 looks and feels similar to older version that is Windows 7. Windows 7 टा बहुत popular थिला सेदिन Windows 8.1 बेसी यूज होला कहीं ना बहुत लोग कंप्लेंट थिला कहीं ना से मेनली मोबाइल डिवाइस पे ही यूज थिला और टच स्क्रीन फीचर था से भी इधर स्टार्ट मेनू नथिला स्टार्ट स्क्रीन थिला तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होतला यूजर मन को भारी कंफ्यूज होतला काम करियु सेति पे जेतु कंप्लेन हला ता पर भी प्लेसला विंडोज 10 किंतु ता लुकटा अथा फील्डा सिमिलर थिला कोई सबरे विंडोज 7 सबरे फीचर सब रहला आहुर किछ एक्स्ट्रा फीचर भी आडला मतलब विंडोज 8.1 जो फीचर रहला बट ता लुकटा नै आगला काबलिया ना विंडोज 7 टाइप Still, it includes a lot of new features and improvements. So, first, what are the features included in Windows 10? First, start menu. Start menu. In the Windows 8.1, it just start screen. So, whereas Windows 8 uses the start screen to launch applications, Windows 10 has reintroduced a more traditional start menu. It's also been expanded to make it easier and find important apps.
जोटा कि हमर विंडोज 8.1 ने थिला इंपोर्टेंट आप गुडा को फाइंड करिया पे थिला ए सब थिला तो ताकू तो रखिला ता सहित से स्टार्ट मेनू जेंते ट्रेडिशनल स्टार्ट मेनू थिला से वाला स्टार्ट मेनू से नै आसला एटा था विंडोज 10 ला फीचर जो से ऐड कर दिला विंडोज 7 ला स्टार्ट मेनू और विंडोज 8 ला स्टार्ट स्क्रीन जेला को कंबाइन कर दिला नेक्स्ट असला देखो 8 हमरा विंडोज 7 ला जोड़ा थिला ए टाइप ला स्टार्ट मेनू थिला ये सब जिनसे नथला ये सब जिनसे थिला बुझे ना विंडोज 8.1 में तो ये तीनटा को से कंबाइन कर देगी कर दिला विंडोज 10 ला स्टार्ट मेनू ठीक है जी नेक्स्ट I would introduce kala Windows 10 that is Microsoft Edge. So Microsoft Edge is a new browser designed to give Windows a better experience on the web. अभी जैसे Windows 7 हो 7 जिनका Internet Explorer ताकू replace कला किए ना Windows 10 ने Microsoft Edge. It's faster, more secure, and includes a lot of new features. Microsoft Edge is meant to replace Internet Explorer as your default web browser. तो ये Internet Explorer को replace कर देला ये तुम्हारा default browser है गला however you can change it but you are still able to use that is Internet Explorer or any other browser if you prefer जब तुम Google लग जिनाई मते Mozilla यूज करियो ना मते Chrome यूज करो सेमती किछ नै but Microsoft Edge जो बनेला जो Internet Explorer को replace कला एथरे बहुत बड़ा सिक्योरिटी देला बहुत बड़ा एक्स्ट्रा फीचर्स भी दे देला तो ये वाला बड़ा फीचर Microsoft Edge ये वाला Microsoft Edge रो स्क्रीन से Internet Explorer टाइप दिखा को बट सेथरे बहुत बड़ा नया फीचर्स ऐड कर देला नेक्स्ट आवर बढ़िया से देची Cortana ये कौन ना Cortana is a voice activated personal assistant similar to Siri and now Google Siri थिला हमर Apple iOS रो गोटा voice assistant जो थरे कि तमे जहां भी कहले से तुमको ता रिलेटेड जिनस सर्च करके इंटरनेट दे पड़तला से बोली वर्तमान विंडोज 10 ने से ऐड कर दिला Cortana you can talk to this virtual assistant with your computer's microphone जे तम कंप्यूटर माइक्रोफोन अछि जनरली लैपटॉप तो इनबिल्ट है जदि डेस्कटॉप अछि जैसे तमे माइक्रोफोन लगै छ तमे सेथरे ताकू किछि भी वॉइस रे कहले से तमो असिस्ट कर परिबो you can use it to get weather forecast set reminders तमे किछि रिमाइंडर सेट करियो छ ताकू सेट कर परिबो टेल यू जोक्स से तम किछि जोक्स कहि परिबो सेंड ईमेल्स तमर मेल पठै परिबो किछि फाइल की फाइंड करै परिबो एवं इंटरनेट रे किछि सर्च भी करै परिबो एमति बहुत बड़ा जिंस तमर से Cortana रे करै परिबो ए जिंसला से स्टार्ट कला उतरे बाय ऐड कला विंडोज 10 ने दैट इज Cortana स्क्रीन डॉट किछि एबले आसीबो एठी तमे किछि भी एडा देखो ए जो वॉइस कमांड टाइप क्लिक करके तमे जहां भी माइक्रोफोन में कहबो से जिंस ऑटोमेटिकली टाइप हिजो से तबु सर्च करियो नेक्स्ट मल्टीपल डेस्कटॉप एंड टास्क व्यू ये बड़ा बहुत बढ़िया फीचर देला ना इंस्टेड ऑफ कीपिंग एवरीथिंग ओपन ऑन द सेम डेस्कटॉप जनरली हमें गोटे डेस्कटॉप ही काम करे सिखिछे तो गोटे डेस्कटॉप रे काम न करके यू कैन मूव सम ऑफ योर विंडोज टू अ वर्चुअल डेस्कटॉप आ गोटे वर्चुअल डेस्कटॉप को तमे किछि विंडोज को मूव करे परिबो टू गेट देम आउट ऑफ द वे तमे अलगा काम करो and the new task view features makes it easy to manage all of your open windows तो तमे डिफरेंट डेस्कटॉप रे काम करि परिबो लाइक दिस या विषय आगु हम डिस्कस करिया केमति नया डेस्कटॉप बनेबा केमति सेtre काम करिबा जेम तो गाइड अछि डेस्कटॉप 1 डेस्कटॉप 2 और इट इज सब डिफरेंट विंडोज एथरे कि चलगा सेथरे कि चलगा तो बहुत बढ़िया फीचरटा दैट इज मल्टीपल डेस्कटॉप एंड टास्क व्यू ठीक है जी नेक्स्ट एक्शन सेंटर the new action center is pretty different from previous version of windows रे जो action center था ये तो बहुत बड़ा completely different असला पूरा different हुआ but बड़े features से ऐड कर दिला for example it's been expanded to let you access frequently used settings such as Wi-Fi connectivity tablet mode it is also where you will see important notifications अगर एक्शन सेंटर भी नोटिफिकेशन आउथला एथि भी आउथछि प्लस तावा दे वाईफाई कनेक्टिविटी टैबलेट मोड ए सब भी एक्शन सेंटर से ऐड कर देला सो इफ योर कंप्यूटर रिसीव्स एन अपडेट यू विल गेट अ नोटिफिकेशन अबाउट इट हियर जहां भी अपडेट्स असला सब तमे ए जगह पाइबो जे ए अपडेट आछि बा ए कुरियर अछि बा से कुरियर अछि बहुत बड़े जिंस ऐड कर दिछि एक्शन सेंटर रे और एक्शन सेंटर स्क्रीन टा किछि एई बले देखाउ छि आज रो डेट रे विंडोज 10 ने
like the tablet mode, jahabi connection achi se sab jinsa everything is here. Jahabi notification thiko so wait from thora asibo. To yala action center, which is the feature of Windows 10. Next, but tablet mode add kala Windows 10 ne जेमति कि हमरा थेला विंडोज 8.1 ने विंडोज 8.1 टा ही से बनथला टैबलेट मोड पे किंतु विंडोज 10 ने से ताकू अलग अलग करला माने तमे चाहिले टैबलेट मोड रे काम करि परियो तमे चाहिले नॉर्मल डेस्कटॉप मोड पर लैपटॉप रे काम करि परियो सो अनलाइक विंडोज 8 विंडोज 10 मेक्स अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन डेस्कटॉप्स और लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स देटा भितर से कंप्लीटली अलग अलग करे देला. If you are using a keyboard and mouse with Windows 10, that my keyboard mouse use करते हो Windows 10 ने, you will be in by default desktop mode. तो उसे desktop mode भी नहीं जीवा. But if your computer also has a touch screen, तमर monitor का touch screen activated होची, you can go into tablet mode at any time. जितना चाहो tablet mode पे जाइए, जितना चाहो अपन desktop mode पे आसी परियो. Tablet users can also switch back to desktop mode if they prefer. जितना भी चाहेंगे सबने desktop mode पे आस्पिरे ए फीचर टा से Windows 10 एक्टिवेट कर दिला तमे चाहिए तमे tablet mode पे जाई परिबो अदरवाइज तमे desktop mode रे भी काम करि परिबो जेटा कि Windows 8.1 ने केवल थला tablet mode और Windows 7 टा थला केवल desktop mode म सेट में गले Windows 10 टा कंबाइन करे दिला Windows 7 और 8.1 को कंबाइन करे कि से गोटे करे दिला तमे चाहिले डेस्कटॉप मोड रे काम करि परियो तुम चाहिले टैबलेट मोड रे भी काम करि परिबो सो दीज आर द फीचर्स ऑफ विंडोज 10 एटा हला टैबलेट मोड रे स्टेट जे टैबलेट मोड रे गलो ताले ए टाइप रे आसीबो सेठी आ एते स्टार्ट मेनू ये से एते सब देखबोनी तमरो डायरेक्ट ए टाइप रे आसीबो तबे एथे होम करे कि टच में से जल्दी काम होय से टाइप रे तुमे काम करि परिबो सो दीज आर द फीचर्स ऑफ विंडोज 10 the next question is should you upgrade to windows 10 Windows 10 को अपग्रेड करिया दरकार पा करिचो as you can see Windows 10 is much more similar to older versions than it is to Windows 8 Windows 8 रे जेम थिला से भले न होई कि से older version जोटा कि Windows 7 से भले देखिया को it is also faster and more secure it is security level भी बढ़े दिया गला प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत फास्ट काम कला and it will continue to be supported for Microsoft for several years to come ये बहुत वर्ष में जैसे कि ये फैसिलिटीज देची ये बहुत वर्ष जाए ये काम करियो if your computer is currently using Windows 7 or Windows 8.1 and meets the system requirement जैसे से Windows 10 system requirement को meet करूची you can upgrade to Windows 10 by purchasing it from Microsoft तो याको किनी पड़िबो किनी की तुमको ताको लोड करियो पड़ियो for all of this reason we recommend upgrading your computer to Windows 10 if you can जदि करि परछो then Windows 10 को अपग्रेड कर दियो काहे ना Windows 10 में बहुत बड़ा फीचर्स दे छै so let's get started to Windows 10 whether you are using a new computer with Windows 10 or an older machine that was recently upgraded either तमे ଗୋଟେ नया कंप्यूटर यूज करछो किबा ଗୋଟେ पुराना मशीन में तुम Windows 10 को अपग्रेड करछो Here I will show you the basic of using the version of Windows. Windows रा जो 10 version ने कौन सब basic जिनसा वर्तन में तुमको आपको देखिए. एटी कोटेन सब मार्क करियर अच्छी. I will focus on using Windows 10 with a desktop or laptop computer only. But if you are using a tablet computer with a touch screen, then some of the instructions will work a bit different. ठीक है अलग टाइप से काम करिबो. So don't worry किंतु जब तुम लैपटॉप बा डेस्कटॉप यूज करछो मु जहा कहबी ए सब सही टाइप रे ही जिंस रहबो ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड तो जे हम स्टार्ट करिया नेविगेटिंग द डेस्कटॉप तो वंस तुम कंप्यूटर विथ को साइन इन करी गला द फर्स्ट थिंग यू विल सी इज द डेस्कटॉप यू कैन थिंक ऑफ द डेस्कटॉप एज द मेन वर्कस्पेस फॉर योर कंप्यूटर तो कंप्यूटर स्टार्ट पे जोड़ा फर्स्ट स्क्रीन आसे सेडा डेस्कटॉप सिदमे तमे से स्क्रीन टा को तमरो मेन वर्कस्पेस भी कहि परिबो बा जोठी रहि तमे काम करिबो फ्रॉम हियर यू कैन व्यू एंड मैनेज योर फाइल्स ओपन एप्लीकेशंस एक्सेस द इंटरनेट एंड मच मोर एठु तमे सब जिंस करिबो ए डेस्कटॉप को जाई पहुंचला परे तापरे ही तमे तमर काम स्टार्ट करि परिबो तापरे ही जहा तमे करियो से जिंस करि परिबो
सो डेस्कटॉप स्क्रीन टा किसी वाला देखा जाए बात सेथरे जो विंडोज सब थाए सेथरे भी सब डिफरेंट विंडोज थाए जेंति कि ये सब डिफरेंट विंडोज अछि सेथरे कि आइकन्स अछि स्टार्ट मेनू अछि टास्क बार अछि नोटिफिकेशन एरिया अछि एते बहुत जिंस अछि सो नेक्स्ट हम देखबा नेविगेटिंग विंडोज हम जो डिफरेंट विंडोज देखले डेस्कटॉप रे सबडा भी केमति नेविगेट करबा सो वेदर यू आर new to a computer or just Windows, it's important to learn the basic of using your computer. On a computer, basic jane nihati darkar. If it all seems a little overwhelming right now, don't worry. We'll take you through it step by step. So, pura step by step naba and show you some of the most fundamental things you'll need to know. Including how to work with the desktop, open and close windows, turn off your computer. Yes, these are the fundamental things of the Windows. Then we'll go to other things. So desktop corner, once your computer has finished starting up, the first thing you will see is the desktop. So the computer starting up procedure ko finish kala, so jo screen the first asila, that is called the desktop. You can think of the desktop as the main workspace of your computer. From here, you can view, manage your files, open application, access the internet, and much more, whatever. So this is the desktop from where we work. ए भितरे हमें केमती ଗୋଟେ फाइल ओपन करछे केमती स्क्रीन को क्लोज करछे केमती स्क्रीन को छोटो करछे बा बड़ करछे रिसाइज करछे केमती कंप्यूटर को बंद करछी ए सब विषय हमें डिस्कस करिबा बट in the next class. So, आज पहले था जहाँ भी तुमको बर्तन कहली ये तो completely theory इतने किसी practical नथिला completely हमरा Windows features इतर रहेला Windows कौन रहेला तो theory में रहता तो इतने practice करना है but next class को हमरा practical start है जिको so be prepared और theory टी वाला बुझी जाओ जोड़ा कि तुमको आगे बहुत सारे लेवल जे चिंता छोड़ा कौन कहीं क्यों ची बहुत बड़े इंटरव्यू क्वेश्चन में ये सब theory ब्रेन क्वेश्चन आसे so see you in the next class. Till then, thank you.